How are you all? I hope that you all are fine. My name is Vidya Nirali from Saraswati Group of Education. And in today's session, we are going to learn one of our grammar topic, that is prefix and suffix. So, what do you mean by prefix and suffix? So, we are going to learn about that thing. Okay? Prefix. Now, first starts with prefix. Prefix means what? First, prefix means such words they are used before, means they are added before any word. Yes, so prefix means such kind of words they are add before the word. के ये ऐसे तरह के वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं. आगे यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ कि डायरेक्ट, तो ये जो वर्ड के आगे अगर कोई मैं वर्ड लगाऊंगी, कोई जो है इफ आई एम राइटिंग इन ओवर हियर, तो इनडायरेक्ट, तो ये जो मैंने आगे ये इन लगाया, तो वो क्या लगाया, वो मैंने प्रीफिक्स ऐड किया. प्रीफिक्स ऐड किया, क्या ऐड किया, आई हैव एडेड द प्रीफिक्स. नाउ मोस्टली बेसिकली prefixes are added to make the word opposite. प्रीफिक्स किसके लिए हम यूज करते हैं, कोई भी वर्ड का हमें अगर उसका ऑपोजिट करना है, राइट? अगर कोई भी वर्ड का to make any word opposite, right? Prefix we are using to make any word opposite. किसी भी वर्ड का हमें opposite करना है तो हम लोग prefix का इस्तेमाल करेंगे. Now there are many words which are used as prefix. ऐसे कई वर्ड्स हैं जो prefix के फॉर्म में यूज किए जाते हैं. So वो कौन कौन से वर्ड है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. पर उसके पहले हम suffix का मीनिंग भी जान लें कि suffix क्या है. अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सफिक्स यानी कि जो वर्ड्स वर्ड के बाद में लगते हैं, the words which are added at the end of the word. के जो भी वर्ड है उस वो वर्ड कंप्लीट हो गया और उसके बाद में जो वर्ड हम ऐड करते हैं, such words are known as suffix. Okay? So ऐसे words भी कई सारे हैं which we are going to learn in today's session. जो वर्ड बाद में लगते हैं उसे suffix बोलते हैं, जो वर्ड पहले ही लगते हैं उसे हम prefix बोलते हैं. और suffix का इस्तेमाल कहीं और तरह का भी होता है, जैसे कि यहाँ prefix जो है वो opposite बनाने के लिए यूज करते हैं, तो suffix का इस्तेमाल भी कहीं और ऐसे वर्ड्स है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे आगे इस वीडियो में देखेंगे. पर अभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो चलो देखते हैं. So, prefix में आते हैं कई तरह के words, जैसे कि un, then dis, this, un, this, then d, pre, d, जैसे कि pre, right? Then after re, in, ir, il,
Then after over, out, up, then pro, then after miss, anti, और कौन से वर्ड है? ऑटो, एक्स्ट्रा, then be, be, then after x, go, then after inter, try, under, so these are words and etc. और भी कई words होंगे, पर ये जो basic जो भी words आते हैं which I have already written over here. So which words are this? These all the words are prefix. So students, if you want to note this down in your book कि prefix में कौन-कौन से word आते हैं, then you can also note it down. But before that, I will give you a minute to note down. But before that, let's say this, that which words will come under this? On, this, the, pre, re, im, in, ir, ill, over, out, up, pro, miss, anti, auto, extra, be, ex, co, inter, try, under, etc. Okay, so these are the basic words which are used in this prefix. So I am giving you a minute so you can note it down that which words are coming in the prefix part. Okay? So, I hope students that you have noted down this in your book that which words will come under prefix. Now, let's see the examples of all these words कि उसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं. Okay? So, let's get started with that. Okay, so first we are starting with the prefix, alright? So if I say kind, kind means कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत kind है, जिसके पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो बहुत दयालु है, दयालु, right? तो kind, तो अगर उसका opposite बनाना है तो we are using the word prefix. Unkind, unkind. Then after, if I say wise, so unwise. Then honor, honor. Honor के साथ क्या लगेगा? Unhonor is not proper, so we are going to add dishonor, dis. Then after, the next is comfort. If I say comfort, so that is discomfort. For next, that is grade. I know that grade यहाँ पे grade का use ऐसे किया गया है in this sentence, in this over here, grade is used as कि आप एक level तक पहुंच चुके हो. You have reached this grade. कि आप अभी level cross, you have reached this much of height. તમે અહીંયા સુધી એક level cross કરી લીધું છે. તમે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છો. Now, to make the opposite of this, that is degrade.
પહોંચી ગયા છો, but now you are going down. ઉપર જવાને બદલે now you are going in a downward slope. So that means કે you are degrading yourself. તમે તમારી self ને down કરો છો. You are making it low. That is known as degrade. The next is possible. So we used to say that is impossible. Students, there are no such kind of rules to remember these things, that when we are going to use this, all this, because we have very vast vocabulary. यानी कि हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम ऐसे नहीं याद कर सकते कि इसके साथ ये वर्ड ही प्रीफिक्स यूज होगा. You have to use it with your mind and you have to solve this. By doing the practice of prefix and suffix, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा, आपको अपने आप ही ये आ जाएगा. And with this we will practice this with the help of exercise also. Okay, so you don't need to worry about that. Now the next is इनका हमने देख लिया. Now moral, that is immoral. Right students? Then caution. Caution, when you are going out, but you are seeing something, a board on the road. आप एक बोर्ड देखते हो रास्ते पे, तो वो caution means यहाँ पे आगे कोई danger है. There is something danger, so you need to take caution of that. So caution कि उसके आगे क्या, उसके पहले जो care करते हैं उसे क्या बोलते हैं? Precaution. Like just nowadays the viruses are spreading so much, right? That this COVID. So we are taking precaution means हमें कुछ हो उसके पहले ही हम केयर करते हैं. That is known as precaution. And caution means आगे danger है, तो danger है तो हमें पता है, तो उसके पहले क्या करते हैं? Precaution. Danger के पहले हम खुद की केयर करते हैं. So that is precaution. Now let's see the next one. That is in this fix also. This is fix. Now if we add P, it becomes a word that is prefix. Now the next is collect. Then recollect. To gather all the things. Recollect करते हैं हम लोग. Right? That is recollect. Afterwards, regular. Irregular. Regular, irregular. Direct, indirect. Then after, close and close. ये close है, and enclosed means वो close नहीं है, वो open है. You have opened that thing. That is known as enclosed. Then after, understand. Then misunderstand. Misunderstand यानी कि understand आप समझ रहे हो, misunderstand यानी कि कोई गलतफहमी हुई है आपको, you are mistaken that thing. So that is misunderstand. Here, if you have noticed, I have used the word mistaken. Taken के साथ मैंने कौन सा prefix ऐड किया? I have used the prefix mis. Now the next is biography. Then autobiography. We have used the word prefix autobiography. Ordinary. Then extraordinary. Ordinary, extraordinary. Then after the next is little. Then belittle. So students, you can see over here that we have used many prefixes with such kind of words. Unkind, unwise, dishonor, discomfort, degrade, impossible,
immoral, precaution, recollect, irregular, enclose, misunderstand, autobiography, extraordinary, belittle, then outdoor, indoor, then after antibiotic. So such kinds of words, as we know that we are adding the prefixes. Prefixes means the words which we are adding before the word के कोई भी word जो हम है वो ये word हमारा जो word है उसके आगे हम कुछ ऐड करते हैं, so that is known as prefix. Now let's understand that what is suffix. We have learned about prefix. Now let's understand that what do you mean by suffix. Now suffix means we use word at the end of the word which is added at the end of the word कोई भी वर्ड के बाद में एंड में जो वर्ड हम ऐड करते हैं that word is known as suffix. means जो वर्ड पीछे लगते हैं, जो भी वर्ड पीछे लगते हैं such words are known as suffix. and suffix हम किसके लिए यूज करते हैं? suffix are जैसे कि हमने देखा था कि prefix we are used to make opposites. ऑपोजिट्स बनाने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं. नाउ फॉर सफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? वी आर यूजिंग सफिक्स टू मेक एनी वर्ड नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. We are using this to make any word noun, adjective or adverb. हम कोई भी word को suffix add करके हम कोई भी word को like noun बना सकते हैं, adjective बना सकते हैं और even we can make the adverbs. So such kinds of words which we are adding, and by adding such words we form a new word and that word becomes our. Sometimes कोई word का पीछे हम suffix add करके sometimes that word becomes our noun. वो word हमारा noun बन जाता है, तो कई बार वो adjective बन जाता है, तो फिर कई बार वो हमारा adverb बन जाता है. So in such way suffixes are used. Again I am saying कि जो भी word हम end में लगाते हैं, वो जो पीछे लगाते हैं, उस word को हम suffix बोलते हैं. जो word हम आगे लगाते हैं, उसे हम prefix बोलते हैं. प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम ऑपोजिट्स के लिए करते हैं. सफिक्स का इस्तेमाल हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाने के लिए करते हैं. ओके, सो नाउ अब सफिक्स में कौन-कौन से वर्ड्स आएंगे? लेट्स हैव अ लुक. सफिक्स में वर्ड्स आएंगे s, es, d, ed, then after ing, y, ly, then after ish, then after er, est, then nest, less, hood, nest, less, hood, full, ship, age,
age. So such words are used and then etc. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि सफिक्स में एस es वो आपको पता है कि हम पीछे ही लगाते हैं, राइट? सो वो सफिक्स हो जाते हैं s es d ed ing y ly ish ish er est nest less would full ship age and etc. So such words are, by adding such words at the end of the word, ये words को हम word के end में लगाते हैं तो वो word हमारा noun भी बन सकता है, adjective भी बन सकता है और adverb भी बन सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ly वाले जो words होते हैं वो adverb होते हैं, राइट? तो अगर कोई की word के पीछे हम ly लगा देते हैं तो वो word क्या बन जाएगा हमारा? That word will become our adverb. In the same way, by adding such things, we are great है, right? हमारे पास word है great, अगर उसके पीछे हम er या est लगाते हैं तो वो word हमारा adjective बन जाएगा. That word will become our adjective. Now, if I am using the word teach, अगर इसके पीछे मैं er लगाती हूँ टीचर, तो टीचर हमारा क्या बन जाएगा? टीचर becomes our noun, right? Isn't it interesting students कि अगर कोई भी वर्ड के पीछे हम कुछ लगा देते हैं तो वो हमारा कोई भी एक वर्ड लाइक कोई डिग्री बन जाती है, that is noun. Sometimes it becomes adjective, sometimes it works as an adverb, right? So now students, if you want to note this down, the words which are used in suffixes, then you can note it down. Okay, so I hope that you have noted this down, and now we are moving towards our next, that is how we are using this. For example, now you can see over here cow. अगर ऐसे लगा देंगे cows, then after box, अगर उसके पीछे s boxes, plural हो जाएगा वो हमारा, singular plural का concept आ जाएगा. Yes. Then after that, then after prove, अगर d लगा देंगे तो proved. Then after play, अगर उसके पीछे ed लगा देंगे तो played. वो पास्ट हो, वो हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा. Now, if I say that beat, that beaten, then after eat, eating, right? Then after that dirt, dirt means gana. Of dirty changes its form. Then after if I say slow, अगर ly लगा देंगे slowly, ly यानी कि धीरे से चलो, slow means धीरे, और अब हमें बोलना है कि तुम धीरे से चलो यानी कि you walk slowly, right students? Now the next is small. If we will add er, then smaller, it becomes the adjective. Great, greatest. Then after teach, teacher. After that child, childish. Child के पीछे आप would भी ऐड कर सकते हो, childhood, childish. ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड के साथ एक ही सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड होगा, कई सारे ऐड हो सकते हैं, but that depends on the sentence. वो हमें सेंटेंस के देख के ही ऐड करना होगा कि क्या आएगा. Okay? Then after it is harmful, harmful, careful. So you can see we have over here added the suffixes.
कि हम प्रीफिक्स के जैसे हमने एग्जांपल्स देखे, वैसे ही हमने यहाँ पे सफिक्स के एग्जांपल्स देखे। नाउ लेट्स सॉल्व वन ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। First exercise which we are solving, that is the exercise of the prefix. Okay? Okay, so now here you will be given some options. Such options are, I am writing it over here, the options in, then after this, if, then it is im and un. These are the options given to you. Now with the help of these options you have to solve this. So first is necessary. अननेसेसरी, नेसेसरी यानी कि जरूरियात, अगर हमें जरूरत नहीं है यानी कि अननेसेसरी, बिन जरूरियात, अननेसेसरी। यहाँ पे हमने प्रीफिक्स ऐड किया अन, so we'll cut this because we have used this. Now efficient, मेरे पास efficient means कुछ ज्यादा, efficient space है, if I say मेरे पास ज्यादा space, efficient। Inefficient means in यानी कि मेरे पास कम है, inefficient space, मेरे पास space नहीं है। After that moral, immoral, responsible, irresponsible, and after that advantage and disadvantage. Okay students, I hope कि अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है, that you have to add the prefix and you have to solve. Prefix यानी कि आपको आगे word ऐड करना है। Okay? Now the next exercise, that is suffix. Suffix. So here I am writing column A part and over here I am writing B part. Okay? Now so students, in the A part, I have written the word possible, educate, relation, arrange and exist. Now in the column B, I am going to write the words suffix. Suffix जो है, जो हमारे, वो हम यहाँ पे लिखूंगी. That is ship, meant. उसके बाद आएगा okay. So this we have written the suffixes. Now possible, ये possible है, तो possible के possible ship, now possible meant, now possibility. Does it looks good? Possibility, possibility. You have here the word, right? So here we are going to take the word as possibility. Right? Now the next is educate. Education, educatement, educations,
education. Education. So here it will come. After that, relation. Relationship. So this friendship, relationship, that's way. Arrangement. And then existence. So this we have solved the exercise of suffixes. Okay, so students, I hope that you have understand the concept of prefix and suffix very well. Prefix यानी कि the words which we are adding before the word. किसी भी word के पहले हम जो word add करते हैं उसे हम prefix बोलते हैं. And the words which we are adding at the end of the word, यानी कि word के बाद में जो हम add करते हैं, these words are known as suffix. Now, if you have still any doubt, then please rewatch the video. See the video again, and your doubts will be solved. Okay? Till then, bye bye. Take good care.